Can we start now? We are good to go. Good afternoon, ladies and gentlemen, distinguished guests, delegates of Ctpdcon-Era 2023, the first virtual international conference on educational reforms and advancement, organized by the Council for Teachers' Professional Development, CTPD, in collaboration with the organizing partners, K.R. Mangalam University, Gurugram, Haryana, India, Galgotia University, Greater Noida, Uttar Pradesh, India, Saraswati College of Professional Studies, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India, Sadyog Darshan Institute of Education and Research, Faridabad, Haryana, India, DAV College, PG, Dehradun, Uttarakhand, India, and Azad College of Education, Satara, Maharashtra, India. We are profoundly happy to associate as our conference knowledge partners with Vishwa Yuvak Kendra, New Delhi, India, Yuhan Touch Foundation, India, Social Development and Research Foundation, India, Council for Teachers Education Foundation, India, Policy Research Center, Bangladesh, and our publication partners of national and international recognition, Easy Education Publishing, Red Shine Publications, and International Journal of Education and Allied Science. Our track 4 covers the topic Equitable and Inclusive Higher Education for Sustainable Development. I, Jennifer Robinson, Assistant Vice Principal, Indian School Al-Wadi Al-Kabir, Sultanate of Oman, and it is a great honor for me to be the moderator for this educative technical session of Ctpdcon-Era 2023. The track 4 is on the theme Equitable and Inclusive Higher Education for Sustainable Development, and the sub-theme for this technical session, subtrack 4.1, Equitable Access to Quality Education. Today's session is all about education is recognized as an integral element of the sustainable development of our country. Making education accessible to all by the way of accommodating their various needs has many implications for sustainable development. This track will examine the status of inclusive education in the various higher education sectors in order to identify the challenges, opportunities, and barriers to achieving inclusive education. Of course, we have eminent speakers, paper presenters who shall be sharing the expertise and insight in this field. I am very delighted to have a warm welcome of our esteemed chair, Dr. Kaushal Sharma, Associate Professor and Head, Department of Hearing Impairment, Faculty of Special Education, Dr. Shaguntala Misra, National Rehabilitation University, Lucknow, Uttar Pradesh, India. And also our co-chair, Dr. Upasana Singh, Director, Human Touch Foundation, Greater Noida, Uttar Pradesh, India, for gracing us with their presence and leading this significant session at Ctpdcon-Era 2023. I also would like to welcome our convener, Dr. Professor Tanya Gupta, and also our co-convener, Dr. Pooja Verma, to this conference, track 4. I feel honored to introduce a very important person here, Dr. Jugnu Gatar Bhatia, the principal, Satyog Darshan Institute of Education and Research, Faridabad, India, for the overview of the plenary session. Thank you so much, Jennifer ma'am. Thank you, ma'am. Honorable Chair,
Dr. Kaushal Sharma, and co-chair, Dr. Upasana Singh, moderator of the track, Jennifer Robinson, ma'am, executive members of CTPD India, and our valued paper presenters and participants from various colleges and universities. A very good afternoon to one and all. I, Dr. Jugnu Khattar Bhatia, feel honored and privileged to welcome you all on the behalf of the organizing committee of 2 days International Conference on Educational Reforms and Advancements. Our track number 4, that is based on the equitable and inclusive education. Inclusivity is at the heart of a progressive education system, and this track number 4 will focus on addressing disparities in higher education and exploring strategies to ensure equitable access to quality education for all. Education is a key part of sustainable development. The Sustainable Development Goal 4, that is SDG 4, aims to ensure inclusive and equitable quality education for all. SDG 4 also promotes lifelong learning opportunities for all. Our track number 4.1, the main theme of this particular track is equitable access to quality higher education. And the other subtracks are the models and practices of educational innovation for ensuring equity, gender equity in higher education, accessibility and equitable quality education for the specially abled, education in emergencies, that is conflict zone, pandemics, climate change, and disasters. And last is the quality assurance in higher education. With this note, without much ado, let's start with the technical session, and my best wishes to all paper presenters. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. It is once again my honor to introduce our esteemed chair, Dr. Kaushal Sharma, Associate Professor and Head, Department of Hearing Impairment, Faculty of Special Education, Dr. Shakuntala Misra, National Rehabilitation University, Lucknow, Uttar Pradesh, India. Sir has completed his PhD and master degree in special education. He has been working in the field for the last 23 years and involved actively. At the moment, he is advising and supervising the master's and graduate level students, as well as the research scholars in teacher training in special need education, and mentor to many students in India and abroad. He holds various positions nationally and internationally at university level, such as MJP Rohilkhand University, UEE Mission, MP Boj Open University, and Addis Ababa University, Ethiopia. He is also holding positions in Academic Council, Board of Universities, and resource person to various universities and colleges. Additionally, he has participated and presented various papers in the national and international seminars and conferences, and participated in many research projects in a disability field. He has been author and co-author of more than 24 books dealing with various areas of special and general education. Sir, it is our privilege that you are here with us. Please accept as a token of gratitude from the organizers of the conference this virtual memento. With your guidance, we are confident that this session will be resounding success, leaving a lasting impact on all our participants today. May I invite you, sir, to deliver your address. Warm wishes to you all. Thank you very much, Dr. Tania, Dr. Jennifer, Dr. Juno. So let me try Sorry to interrupt, sir. If you have any presentation, I'll come. Yeah. I'm just going to share it. Okay, sir. Is it visible? Like to see, sir. Is it visible?
No, sir. Let me check. Now is it visible? This Yes, yes. it's Okay, visible. thank you very much. So I would like to welcome all the participants who are participating in this CTPDcon and conveying my best wishes to you, to your organizers and all who are actively engaged in this session. Let me start with some basic points. When we are, may I allow to have the bilingual or Yes, sir. That will be good. because I think some of the participants are from Yes. that background. So, okay. So when we are talking about the equitable and inclusive higher education for sustainable development, it is a very debatable issue. And I congratulate you all that you have taken this topic as a debate. Equitable and inclusive higher education, these are situated in both the extreme ends on the practical grounds. But theoretically, we are just so with the inclusive education and equitable type of things. जब हम बात करते हैं इक्विटेबल क्राइटेरिया की इंक्लूसिव एजुकेशन, तो इंक्लूसिव एजुकेशन जहां हम बात करते हैं कि साहब हमारे पास में कुछ डिसेबल्ड बच्चे होंगे, कुछ नॉन डिसेबल्ड बच्चे होंगे, उनको हम मिलाएंगे एक क्लास में, जैसे हम कहते हैं अंडर वन रूफ, हम उनके साथ में इंटरेक्ट करेंगे और ये हमारा इंक्लूजन पार्ट हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये एक बहुत ही अजीब तरीके का कॉन्सेप्ट है जिसे हम इंक्लूजन के नाम पर दुनिया के सामने रख रहे हैं। पहली बात तो ये है कि इंक्लूसिव एजुकेशन में कहीं भी ये नहीं कहा गया कि इंक्लूजन डिसेबल्ड लोगों का ही होगा, दूसरों का नहीं हो सकता। और रही बात इक्विटेबल होने की, तो आमतौर पर हम देखते हैं अपने जीवन में, अपनी क्लासेस में, अपने यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में कि हम इक्विटेबल नहीं होके हम हो रहे हैं वहां पर कि इक्विटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। हम इक्वालिटी पर बात करने के बाद ये सोचते हैं कि अब इक्विटी हो जाएगी। ऐसा है नहीं। इक्विटी और इक्विटेबल होना दोनों बातें, एक इक्विटी और इक्वालिटी दोनों अलग अलग चीजें हैं। इक्वालिटी में आपके पास में जो बाय नॉर्म्स कोई चीज है वो आप सबको एक जैसी पैरिटी के साथ में सबको एक बराबर दे रहे हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं इक्विटेबल, देन इट कम्स टू द अमाउंट ऑफ नीड्स। ये नीड बेस्ड है, ये राइट बेस्ड अप्रोच है। और जो इक्वालिटी है वो राइट बेस्ड अप्रोच नहीं है, वो अपॉर्चुनिटीज हैं जो हम दूसरों को दे रहे हैं। सो मैं काम यहीं से अपनी बात को शुरू करता हूं कि जहां हम हायर एजुकेशन की चैलेंजेस की हम बात करते हैं, तो हायर एजुकेशन सबको मालूम है, इट्स अ वेरी पावरफुल टूल फॉर द सोशल मोबिलिटी एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। हम जब बात करते हैं हमारे पास जितनी वर्कफोर्स है, वो जितनी कम्युनिटी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उन सब चीजों में हमारा हायर एजुकेशन एक बहुत मजबूत पिलर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर के रूप में सामने खड़ा होता है, क्योंकि हम काम करवा सकते हैं जो हमारे पास एजुकेशन जिनके पास में है। तो हायर एजुकेशन में जब हम अपनी वर्कफोर्स को देखते हैं, उनकी कंट्रीब्यूशंस को देखते हैं, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम ये भी देखें कि क्या उनके सामने कोई चैलेंजेस हैं या नहीं। हम बहुत सारे देशों को उदाहरण के तौर पर देखते हैं इंक्लूजन में। हम बहुत सारे, खासतौर पे यूएस को, कनाडा को, यूरोपियन कंट्रीज को, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को हाईलाइट करते हैं, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि इंडिया उनसे अलग है। हमारे पास जो वेरिएशंस हैं बहुत हैं, हमारे पास एक रेंज बहुत लंबी चौड़ी है। हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, लो इनकम फैमिलीज के हैं, मिड इनकम फैमिलीज के हैं, हायर इनकम फैमिलीज के भी हैं, अंडर रिप्रेजेंटेटिव माइनॉरिटी ग्रुप्स के भी हैं, रूरल एरिया में भी रहते हैं। उनके जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस अलग हैं, उनके माइंडसेट्स अलग हैं, उनके रिचुअल्स, उनकी डाइवर्सिटी, यानी हम जब सोशल डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो वो हमारे पास में एक बहुत बड़ी रेंज है।
इसके लिए बहुत सारी चीजें जिम्मेदार हो सकती हैं। हमारे फाइनेंशियल बैरियर्स हो सकते हैं, जियोग्राफिकल बैरियर्स हो सकते हैं, हमारे एजुकेशनल बैरियर्स हो सकते हैं, पार्टिसिपेशन है, एकेडमिक रिप्रेजेंटेशन है, या क्वालिटी यूनिवर्सिटीज, क्वालिटी एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज शायद हमारे पास में कम हो रही हूँ। ये भी कई कारण हो सकते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन इक्विटी इश्यूज हैं हमारे हायर एजुकेशन में, मैं सीधे सीधे उन पर आना चाहता हूं। सबसे पहले हम बात कर लें एक्सेस की। क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम एक्सेसिबल है, सबकी पहुंच में है? स्टूडेंट्स फ्रॉम लो इनकम फैमिलीज आर लेस लाइकली टू अटेंड कॉलेजेस। हम हालांकि ये बात पहले कह सकते थे, आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि शायद ये चीज थोड़ी कम हुई है। राइट टू एजुकेशन आ गया, उसके कारण से हमारे लो इनकम फैमिलीज को भी स्कूलों तक जाने का मौका मिला। लेकिन एक बात और है, स्कूल तक पहुंच जाना और स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के या उनकी फैसिलिटीज को पूरी तरीके से इम्बाइब कर लेना, क्या ये दोनों बातें सेम हैं? हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण से एक्सेस नहीं हो पा रहा। एक स्कूल तक एक बच्चा पहुंच तो जा रहा है, लो इनकम फैमिली का है या किसी और वजह से भी दूर दराज का है, कैसे पहुंच रहा है ये भी हमें देखना पड़ेगा। ऐसे जियोग्राफिकल कंडीशंस भी हैं जहां स्कूलों तक बच्चे पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है, और वो भी ऐसे बच्चे का जो व्हील चेयर पर है। हमारे पास स्कूलों तक पहुंचने के रास्ते नहीं बने हुए। स्कूलों में हमारी क्लासेस अगर दो मंजिल पे बना हुआ स्कूल है, सेकंड फ्लोर पे चल रही है, फर्स्ट फ्लोर पे चल रही है, बच्चा कैसे जाएगा ऊपर तक? सीढ़ियां हैं, रैंप्स नहीं है। रैंप्स हैं तो उनके रैंप्स का जो इंक्लिनेशन है वो शायद बहुत अच्छा नहीं है। तो हमें ये एक्सेसिबिलिटी को ध्यान में रखना होगा कि स्कूलों में एक्सेसिबिलिटी ना केवल फिजिकल डिसेबिलिटीज की बात करें, हम हर तरीके की बात कर सकते हैं। जो बच्चा लो विजन वाला है, क्या हमारे पास कोई ऐसे साधन है कि हम उनको बुक्स के माध्यम से पढ़ा सकें? अगर हम बुक्स नहीं दे रहे तो क्या हमारे पास दूसरी चीजें हैं जो हम उनको कंपनसेट कर सकें? ये हमारे सामने बड़ा समस्या है। दूसरी बात हम बात करते हैं अटेनमेंट की। जो अंडर रिप्रेजेंटेड माइनॉरिटीज ग्रुप हैं वो कैसे ग्रेजुएट्स हो रहे हैं हायर एजुकेशन की, चूंकि हम बात कर रहे हैं इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ, क्या वो हायर एजुकेशन तक जो आ रहे हैं उनका अटेनमेंट कैसा है? क्या उनका एकेडमिक बैकग्राउंड उस पर असर नहीं डालता? वो किस स्कूल से पढ़ के आए हैं? हम हायर एजुकेशन में ये बात कह देते हैं कि ग्रेजुएट बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो पका हुआ घड़ा आता है, हम उस पर केवल पॉलिश करने का काम करते हैं। लेकिन बनके तो वो पिछली क्लासेस से आया है, प्राइमरी से और सेकेंडरी से। हम उसको सुधार नहीं सकते। अगर वो टेढ़ा है तो ठीक है, अगर वो उसमें कोई कमी है तो हम उस कमी को दूर नहीं कर सकते। ये कह के हम अपनी जिम्मेदारियों से बच जाते हैं। बड़ी मजे की बात ये भी है कि ये कह के जब हम अपनी जिम्मेदारियों से बचते हैं तो हम वास्तव में अपने कामों को भी पूरा नहीं कर रहे हैं। हम अटेनमेंट को जो उनका पीछे है पहले ही, हम उसको और ज्यादा पीछे कर रहे हैं। ये नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे सामने है, एकेडमिक प्रिपरेशन है, फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, उनके डिस्क्रिमिनेशन है। अभी जैसे कुछ दिन पहले यूजीसी ने एक चिंता भी जाहिर की और अब नया सर्कुलर भी आया कि जो आपके एलजीबीटी ग्रुप है उनको भी स्कूलों में एडमिशन देने की बात हुई है, ट्रांसजेंडर्स को भी बात हुई है स्कूलों में, कॉलेजेस में देने के लिए। लेकिन ईमानदारी से बताएं, हम सब जिन जिन भी एकेडमिक ग्रुप से जुड़े हुए हों, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हों, याद करिएगा हमारे यहाँ कितने ट्रांसजेंडर्स पिछले 5 सालों में स्कूलों में आए। आरटीई एक्ट आने के बाद में हमारे पास कितने ट्रांसजेंडर्स आए? आए भी थे या नहीं? और आए थे तो क्या हमने उनको अंदर स्कूल में लिया है, कॉलेज में लिया है, या हमने उनको अनअटेंडेड करके बाहर भेज दिया? ये बड़ी समस्या भी शायद हमारे सामने होगी। हम इसको स्वीकार करें या ना करें ये हमारी मर्जी हो सकती है, ये हमारी बेशर्मी हो सकती है, मैं दूसरी भाषा में कहूं, लेकिन शायद ये हमारी जिम्मेदारियों के प्रति अपनी आंखों को मूंद लेना भी हो सकता है। आउटकम्स की बात हो रही है। जितने बच्चे हमारे पास हायर एजुकेशन में आ रहे हैं, एक स्टडीज कहती हैं कि जितने भी बच्चे सेकेंडरी एजुकेशन में हैं उनका 30% इनरोलमेंट हायर एजुकेशन में होता है, और हायर एजुकेशन से पास आउट होने वालों की संख्या उसमें रह जाती है जस्ट 50%। यानी 30% अगर अंदर आए हैं तो उसके हाफ 15% हमारे बाहर निकल के जाते हैं।
ये स्टडीज केवल ये बताती हैं कि हमारे यहाँ पास होने वालों की संख्या क्या है, उनके आउटकम्स क्या हैं, ये हम नहीं जानते, क्योंकि शायद इस पर बहुत ज्यादा रिसर्चेस नहीं हो रही हो या हम कराना नहीं चाह रहे हो, क्योंकि इससे हम भी एक सवालों के घेरे में आ जाएंगे कि हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है, हम जिस इंस्टीट्यूशन में अपनी एजुकेशन को चला रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं, उसके आउटकम्स क्या हैं। यही एक कारण है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जब हमारा ये रिफॉर्म हुए हैं सिलेबस के, करिकुलम के, तो ये लिखना जरूरी हो गया है कि हमारे पास प्रोग्राम आउटकम्स क्या होंगे, हमारे पास कोर्स आउटकम्स क्या होंगे। हम कैसे ये मान सकते हैं कि एक स्टूडेंट जो हमारे स्कूल में या कॉलेजेस में आया है, हम उसे कुछ भी नहीं करके उसमें बेस्ट आउटकम की प्रैक्टिसेस को सोच रहे हैं कि वो कर लेगा? बड़ा मुश्किल काम है। शायद जो हमारे पास हाई पेइंग जॉब्स हैं, टीचिंग हाई पेइंग जॉब है, हम आज की तारीख में एक असिस्टेंट प्रोफेसर को गवर्नमेंट में अगर हम बात कर रहे हैं तो शायद उसको 50 to 60,000 मिनिमम हम दे रहे हैं। 50 और 60,000 पर मंथ कोई कम बात नहीं होती है किसी कॉलेज में एक टीचर के लिए। लेकिन हम अगर ये देखें कि उनका आउटकम कितना है, हम देखेंगे उनके रिसर्च पेपर्स नहीं है, जो हैं वो बहुत ही अंडररेटेड हैं। हम देखेंगे कि उनके शायद जो रिसर्च इंटरेस्ट हैं वो उस तरीके से फुलफिल नहीं हो रहे। जब सारे ही हमारे पास पढ़े लिखे बड़े काबिल लोग हमारे यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में हैं, तो फिर हमारे स्टूडेंट्स अपना परफॉर्मेंस नीचे की तरफ क्यों रख रहे हैं? क्या इसलिए कि वो हमारे पास बहुत डिफरेंट ग्रुप से आए हुए हैं और हम उन पर ध्यान नहीं दे रहे, या इसलिए कि हम ध्यान तो दे रहे हैं लेकिन शायद वो नहीं कर रहे जो हमें करना चाहिए? उनके पास स्किल्स नहीं है, गवर्नमेंट चिल्ला रही है कि स्किल बेस्ड कोर्सेज रखिए। हमारे पास में देखिए कि हम अगर स्किल बेस्ड कोर्सेज रख दें, हम चला भी लें, सपोज ये हम कोई ऐसी चीज रख लें जहां पर हाथों का काम करना पड़े, सपोज लेदर इंडस्ट्री से रिलेटेड या लेदर स्किल्स हम सिखाना चाहें, कोई स्विंग स्किल्स सिखाना चाहें, कोई मशीनरी स्किल्स सिखाना चाहें, मैसनरी स्किल्स सिखाना चाहें। आप खुद सोचिए हमारी सोसाइटी क्या है। हमारे सोसाइटी में जब कामों को टैग किया गया है किसी खास प्रकार की कास्ट के साथ में, तो हम ये सोच रहे हैं कि हम रातों रात अपने स्कूल या कॉलेजेस में बदल जाएंगे। हम ये बात स्वीकार कर लेंगे कि हमारा बच्चा भी जाके एक बार्बर का काम कर लेगा, जबकि हमने उसको भी एक कास्ट के साथ जोड़ रखा है। जब तक ये पूरी सोच हमारी नहीं बदलेगी इस पूरे सोसाइटी में, शायद तब तक हम स्किल बेस्ड आउटकम्स की बात ना ही करें तो बेहतर होगा। अगर करना चाहते हैं तो हमें भी ये एग्जाम्पल देना पड़ेगा। हमारे पास टैग्ड हैं हम लोग, ये आदमी लोग घरों के किचन में काम नहीं करते, क्योंकि अगर हम करते हैं तो शायद हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किलें आ जाती हैं। डिस्पैरिटीज हैं हमारी एक्सेस से लेके डाइवर्सिटी, हमारी जो मेन है जिस पर हम बात कर रहे हैं, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी इंक्लूजन का सबसे महत्वपूर्ण एक पार्ट है। हम वो देश हैं, खासतौर पे मैं अगर इंडिया की बात करूं, हम वो देश हैं जहां भाषा के आधार पर तो हमने अपने स्टेट्स बना रखे हैं। भाषा के आधार पर हम लोगों को ये सोचते हैं ये हमारे लोग हैं, ये किसी और के लोग हैं। हम जिस आधार पर देखते हैं, जब हम एक बात करते हैं पूरे देश में तो शायद हम स्वीकार नहीं करते। हमारे बार बार हमें कहना पड़ रहा है कि मातृभाषा में या मदर टंग में हम अपने एजुकेशन को दें, और वो भी कब कहना पड़ रहा है? 72 ईयर्स इंडिपेंडेंस के बाद। क्यों अभी तक ये नहीं हुआ? क्या ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? ध्यान रखिए कि डाइवर्सिटी का मतलब केवल इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि हमारी क्लास में अलग कास्ट के, अलग क्रीड के, अलग लैंग्वेज के, अलग रंग वाले, अलग लंबाइयों वाले, अलग नीड वाले बच्चे हैं। मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि उनकी सबकी नीड्स भी अलग हैं। हम यूपी में बैठ के, मेरे को याद आता है कि मैं एक बच्चे को एग्जाम्पल कहीं साउथ में दे रहा था, और किसी से मैंने पूछा कि हम 4 रोटी सुबह खाते हैं, 2 रोटी दोपहर में खाते हैं, 2 रोटी शाम को खाते हैं, तो वो मेरा मुंह देखने लगा। उसको एग्जाम्पल समझ में नहीं आया। मैंने पूछा क्यों नहीं आया, तो पता चलता है कि भाई उनके लिए रोटी एक लग्जरी चीज है। वो रोटी नहीं समझ पा रहे हैं कि रोटी क्या है। ये बहुत साल पहले की बात है। उन्हें आप राइस का एग्जाम्पल दे दीजिए, वो केवल चावल खाते हैं सुबह शाम दोपहर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारी डाइवर्सिफाइड क्लासरूम है, हमारे एग्जाम्पल भी डाइवर्सिफाइड होने चाहिए। एक जैसा एग्जाम्पल और इलस्ट्रेशन हमारे काम नहीं आने वाले।
हमारे पास ऐसे बच्चे हैं, मैं अपने यूनिवर्सिटी की बात आपको बताऊं कि मेरे इस क्लास में एक ही साथ में ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप बच्चे भी हैं, डेफ बच्चे भी हैं और ब्लाइंड बच्चे भी मेरे साथ में पढ़ते हैं, और नॉर्मल बच्चे जो साइटेड भी हैं और सुनते भी हैं वो भी क्लास में पढ़ते हैं। एग्जाम्पल देते समय मुझे ये 3 या 4 अलग अलग तरीके के टेक्निक्स को अपनाना पड़ता है, जिससे कि ब्लाइंड बच्चा भी विजुअलाइज कर सके, हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा भी सुन सके या समझ सके, इंटरप्रेटर्स मेरे साथ में रहते हैं। तो डाइवर्सिफाइड नीड्स को हमें कैटर करना है, तब हम बात इंक्लूजन की करेंगे। इंक्लूजन का मतलब ये नहीं कि 4 बच्चे हमारे अलग अलग तरीके के बिठा लिए हो या जी इंक्लूजन। अगर ऐसा है तो माफ कीजिएगा, हम इंक्लूजन नहीं कर रहे, हम धोखा दे रहे हैं अपने आप को भी, हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी। और केवल एजुकेशन सिस्टम को, देश को दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, हम अपने देश के बच्चों को खुद एक अपंग बना रहे हैं और ये वादा कर रहे हैं उनके साथ में कि जब वो बड़े होंगे और एक नागरिक बनने की कदम बढ़ाएंगे उस दिशा में, तो वो एक्चुअली नागरिक नहीं होंगे, वो होंगे बेकार, अनप्रोडक्टिव, ये वाली चीजें होंगी। दूसरी बात आती है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी जो हायर एजुकेशन की कॉस्ट है, आप देखेंगे कि आज की तारीख में काफी ज्यादा हो चुकी है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, इन दोनों के बीच में एक आप बहुत बड़ा अंतर देखेंगे। जिस जगह पर हम बीए कर लेते हैं 3 या 4 हजार में, वहां पर 20 हजार में भी बीए हो रहा है। हम हायर एजुकेशन में बीएड की ही आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जहां पर बीएड हमारे पास में शायद 10-15 हजार में भी पर सेमेस्टर हो जाता होगा, वहां पर हमारे पास 1-1 लाख रुपए भी फीस है। ये जो 1 लाख पे करने वाला बच्चा है, वो टीचर बन के 50 हजार रुपये महीना लेगा, खुद सोचने वाली बात है। और अगर लेगा तो तैयार होगा। हम कितने हैं जितने जो उसको पे कर रहे हैं। जब आप उसको जॉब देने की बारी आती है, तब हम क्या कर रहे होते हैं, हम उसे देख रहे होते हैं 10,000-15,000 में बहुत सारे टीचर मिल जाते हैं, काम करना हो तो करो, नहीं करना हो तो जाओ। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में नौकरियां हैं नहीं, जो है वो खत्म हो जा रही है धीरे धीरे और जाएंगी। आप क्या कर रहे हैं, कॉस्टिंग कहाँ है। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको मेडिकल का। जिस जमाने में एमबीबीएस वगैरह के लिए हम लोग शुरुआत में देख रहे थे, बदकिस्मती से मैंने भी ज्वाइन किया था, ये बहुत पुरानी बात हो गई। उस समय शायद मेरे पास फीस, मुझे याद है कि शायद एमबीबीएस की फीस होती थी 10,000 रुपए के आसपास में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में। आज हम देख रहे हैं कि वो 25-50 लाख रुपए तक जा रही है, जबकि उस जमाने में सर्जरीज वगैरह के लिए उनके पास में उनको वो लाना पड़ता था, डेड बॉडीज वगैरह इस्तेमाल करना पड़ता था। आज हमारे पास में वर्चुअलाइजेशन के दौर में हमारे पास सारी चीजें वर्चुअल हैं, सारी चीजों के हमारे पास में बने हुए स्टिमुलेशंस हैं, या सॉरी हैं। इन सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में जब हम काम कर रहे हैं, तो ये वन टाइम कॉस्ट होना चाहिए सिमुलेटेड एनवायरनमेंट को खरीदने के लिए। हर बार हर फीस के साथ में 25-50 लाख रुपया जाना, ये कहाँ का सोच है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा। बीएड करके सारे सारे लोगों को टीचर ही बनना है, वो टीचर बन के प्राइमरी स्कूल में जाके कमाएगा। कितने लोग उसको नौकरी देने वाले हैं। प्राइमरी स्कूल में हमारे यहाँ जाके टीचर्स की हालत देख लीजिए, अफोर्ड कर पा रहे हैं कि नहीं। स्कॉलरशिप्स बढ़ रही हैं, एक रेवड़ी कल्चर, बड़ा अच्छा एक शब्द आया था बीच में कहीं, लेकिन स्कॉलरशिप्स बढ़ रही हैं। मैंने एक ही बच्चे को 3-3 जगह से स्कॉलरशिप लेते हुए देखा है, और ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिन्हें स्कॉलरशिप के बगैर वो एक दिन पढ़ नहीं सकते और उन्हें कभी नहीं मिलती। ग्रांट्स की हम बात करते हैं, पता नहीं कौन ग्रांट देता है, कौन ग्रांट ले पा रहा है। ज्यादातर आप इंस्टीट्यूशन से पूछेंगे तो उनके पास में ग्रांट्स नहीं है, वो अपने फाइनेंशियल एड्स खुद अपने डेवलप कर रहे हैं, और कहीं से भी कैसे भी भीख मांग के भी कार्यक्रम चला रहे होंगे, लेकिन शायद चला रहे हैं। इसीलिए उस डिबेट में नहीं पड़ेंगे, लेकिन बात यह है कि हमें यह शब्दों को ध्यान रखना होगा कि अफोर्डेबल होना चाहिए, तब हम बात करेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, नई एजुकेशन पॉलिसी ने बहुत सारे लोगों को रास्ता दिखा दिया, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि मैं एक स्कूल में जाता हूं पढ़ने के लिए, मुझे एडमिशन चाहिए, मुझे बायोलॉजी पढ़नी है, मुझे साथ में फोटोग्राफी पढ़नी है। टीचर मुझसे कहता था कि भाई भाग जाओ यहाँ से, तुम्हारे लिए हमारे पास कोई कोर्स नहीं है। क्यों क्यों कोर्स नहीं है साहब? मैं बायो के साथ में वो पढ़ना चाहता हूं, मेरा टारगेट है कि मैं अगर बायो के साथ फोटोग्राफी पढ़ लूंगा तो हो सकता है कल जाके जियोग्राफिक चैनल में या डिस्कवरी वगैरह में काम कर सकता हूं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है दोनों चीजें मेरे साथ होती, तो मैं शायद एक
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत अच्छी फोटोग्राफी कर सकता था, लेकिन वो मेरे को इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनके पास ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है। वो ये कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ तो ये सब कॉम्बिनेशंस नहीं है। अरे भाई, आपकी गलती की सजा मैं क्यों भुगतूं? मैं पढ़ना चाहता हूं, मुझे आप पढ़ाइए ना। मेन्यू सिस्टम हमारे रेस्टोरेंट्स के लिए ही है कि हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम में भी ऐसा मेन्यू बना है कहीं? कोशिश करिए कि कभी रेस्टोरेंट में जाके कभी हम कॉन्टिनेंटल भी लें, चाइनीज भी लें, इंडियन कुजीन भी लें, ये भी लें, वो भी लें, और सब में से थोड़ा 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 हम ऑर्डर कर लेते हैं। हम हायर एजुकेशन में ऐसा क्यों नहीं करते? एक सब्जेक्ट इस ग्रुप से, उस ग्रुप से। हालांकि नई एजुकेशन पॉलिसी ये कहती जरूर है कि ऐसा कर लीजिए। कितने लोग कर रहे हैं हमें नहीं पता, ये और कितने लोग कर पाएंगे, इसको कितना आगे तक ले जा पाएंगे, शायद ये बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। हमारी सपोर्ट सर्विसेज हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम है। जैसा मैंने बताया कि मैं जब क्लास में पढ़ा रहा हूँ, मेरे साथ में इंटरप्रेटर्स रहने चाहिए, क्योंकि जो बच्चे साइन लैंग्वेज लर्नर्स हैं उनको मेरे को इंटरप्रेटर्स के जरिए ही पढ़ाना पड़ेगा। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में मैं आपको बताऊं कि शायद हमारी यूनिवर्सिटी एशिया की पहली यूनिवर्सिटी है जो इस तरीके का काम कर रही है, जो इस तरीके का इंक्लूजन कर रही है, जहां हमारे पास हर तरीके की डिसेबिलिटीज वाले बच्चे एक ही क्लास में पढ़ते हैं और हम उनको अलग अलग तरीके से उनकी नीड्स को कैटर करने का प्रयास कर रहे हैं। हम बेस्ट इंक्लूजन अवार्ड और बैरियर फ्री इन्वायरमेंट अवार्ड से भी 2015 में हमें प्रेसिडेंट अवार्ड मिल चुका। उसके बावजूद मैं यहाँ पे अपनी ये नहीं बता रहा हूँ कि हम कितने महान हैं, मैं इससे भी बड़ी महानता की बात बता रहा हूँ कि केवल मेरी फैकल्टी में ही 18 मुझे चाहिए साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स, और हम काम चला रहे हैं 5 के साथ। सोचिए कि हमें नहीं मिल पा रहे हैं, तो मैं दूसरों से जब ये कहता हूं कि भाई आप क्यों नहीं चला रहे हैं, तो वो भी तो ये पूछ सकते हैं तुम्हें तो 5 मिले हैं, हमें और कहां से लाके दोगे? तो ये भी एक बात है। सपोर्ट सर्विसेज हमारे पास नहीं है। हमारे पास कितने बच्चे हैं जो हायर एजुकेशन में ऐसी जगह से आ रहे हैं जो सेकेंडरी या सेकेंडरी लेवल पर, जिनके पास में एक इस तरीके का एनवायरनमेंट था कि वो एक बड़े एक हेडेक बन चुके हैं हमारे हायर एजुकेशन में। उनकी कुछ वेलबींग प्रॉब्लम्स हैं, उनकी कुछ साइकोलॉजिकल सोशलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, बिहेवियर प्रॉब्लम्स हैं। कितने इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर हम इन तरीके की चीजों को कैटर कर रहे होंगे या एड्रेस कर रहे होंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। करिकुलर रिलेवेंस हमारे पास में है या नहीं है, इस पर एक बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है। एजुकेशनिस्ट्स को बिठा दीजिए तो आधे इधर आधे उधर बढ़ जाएंगे और बीच में कुछ लोग रह जाएंगे जो कहेंगे कि पता नहीं बहुत कुछ है। लेकिन हमें सोचना पड़ेगा कि सबसे बड़ा सस्टेनेबिलिटी चैलेंज तो यही है, हमारा करिकुलम। हमारा करिकुलम पहले हमारे पास में ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम था तो हमने वहां से कॉपी कर रखा था। आजकल हम बगैर गए बगैर समझे अमेरिकन सिस्टम को कॉपी कर रहे हैं। इंडिजिनस सिस्टम कहाँ है? हम जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि विजडम में और नॉलेज में क्या फर्क है, लेकिन हम क्या केवल नॉलेज को ही बात करेंगे, विजडम की बात नहीं करेंगे? क्योंकि ऐसा हमारे पुराने नॉलेज सिस्टम में कहा गया है तो इसलिए हम कॉपी कर लेंगे। विजडम कहाँ है? मैं एक एग्जांपल देता हूं। सब जानते हैं, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट होंगे वो अपना बहस बाद में कर लें, लेकिन ये एक बात है कि जो टोमेटो है, घर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं टोमेटो, वो सब्जी है या फल? ये सब जानते हैं कि वो सब्जी है या फल। आधे लोग कहेंगे सब्जी है, आधे लोग कहेंगे फल है। साइंटिफिकली इट इज ए फ्रूट, टोमेटो इज ए फ्रूट, लेकिन उसके बावजूद हम उसे फ्रूट सलाद में काटते नहीं, हम फ्रूट सलाद में उसे कभी यूज नहीं करते। ये विजडम है। नॉलेज वो है कि वो फ्रूट है। यानी हमारे पास में करिकुलर रिलेवेंस हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट और हमारे ऑब्जेक्टिव्स के साथ होना चाहिए। इसमें हम हमारे रिसोर्सेस होने चाहिए, हमारे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग को भी हम इसमें डाल सकते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग या एक्सपीरियंशियल लर्निंग के साथ में दिक्कत यह है कि सर्टिफिकेट नहीं मिलता। वहां पर नॉलेज तो मिल सकती है, लेकिन विजडम को हम कैसे उसमें इनकलकेट करें, ये हमें सोचना होगा। कम्युनिटी एंगेजमेंट एक अलग एस्पेक्ट है और ये भी एक बहुत जरूरी है हमारी सस्टेनेबिलिटी के लिए। यूनिवर्सिटीज बेसिकली 3 चीजों बनी होती हैं। एक होती है रिसर्च, दूसरी होती है टीचिंग और तीसरी होती है एक्सटेंशन एक्टिविटीज। हम लोग एक्सटेंशन एक्टिविटीज में सबसे कम है। हम कम्युनिटी का एंगेजमेंट नहीं करते। काश ऐसा होता कि हर एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज अपने आसपास के किसी एरिया को अडॉप्ट कर लेते
और केवल उसी एरिया पर अगर हम फोकस कर लिए होते अपने आसपास के, हमारे पास बीएड कॉलेजेस चलते हैं, हमारे पास बाकी कॉलेजेस चलते हैं, हम क्यों नहीं वॉलंटियर्स की तरीके से उसी कम्युनिटी में अपने अपने प्रोग्राम्स को, जो भी हमारे डिपार्टमेंट्स के प्रोग्राम होंगे उनके साथ में अगर काम करते, तो कम्युनिटी इंगेजमेंट भी होता और कम्युनिटी भी डेवलप होती। इसीलिए ये ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ कम्युनिटी कॉलेजेस नहीं होते, अमेरिकन सिस्टम में कम्युनिटी कॉलेजेस होते हैं। तो क्यों होते हैं, इस पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। सस्टेनेबिलिटी के लिए रिसर्च होना बहुत जरूरी है। हम रिसर्चेस कर रहे हैं क्योंकि रिसर्च होना जरूरी है, रिसर्च फॉर द सेक ऑफ रिसर्च, रिसर्च फॉर द सेक ऑफ डेवलपमेंट नहीं है, रिसर्च फॉर द सेक ऑफ सस्टेनेबिलिटी नहीं है। आप देखेंगे हमारे, मैं इसका जवाब किसी से नहीं चाहूंगा, लेकिन शायद हम अपने अपने गिरेबान में झांक के देखें, हमारे बीएड एमएड जितने भी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में चल रहे हैं, उनकी एक डिसर्टेशन को, टॉपिक्स को उठा के देखिए, वो कितने सस्टेनेबल हैं। इससे आप हमें पता चल जाएगा कि हम फ्यूचर रिसर्चर्स कैसे पैदा कर रहे हैं। ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स के विषय में मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि चूंकि हमारे इंटरकनेक्शंस हैं हमारे इन्वायरमेंट साइंसेस के साथ में, सोशल साइंसेस के साथ में, इकोनॉमिक चैलेंजेस के साथ में, जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, आजकल तो नया शब्द आ गया ग्लोकलाइजेशन। ठीक है, ग्लोबलाइज भी बनिए, लेकिन ग्लोबलाइज आपको बनना पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबलाइज पर्सपेक्टिव्स हमारे हैं। हमारा टीचर केवल और केवल दिल्ली में या देहरादून में या लखनऊ में या झुमरी तलैया में पढ़ाने के लिए नहीं बना। वो टीचर जब यहां से बन के जाएगा, हो सकता है उसे दुनिया के किसी भी कोने में अगर नौकरी मिले तो वो वहां जाना चाहे। तो हमें ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स को ध्यान रखना पड़ेगा। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां पर हम कहीं हमारा लैकुना है, हमारा इवैल्यूएशन सिस्टम पूरा आउटडेटेड है, हमारे साथ में नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, डेफ बच्चों को हम साइन लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, लेकिन उनका एग्जाम हम कभी भी साइन में नहीं लेते, हम उन्हें लिखने के लिए कहते हैं। अरे उसे लिखना ही आया होता, उसके पास में इतनी वोकैबुलरी होती तो वो पढ़ लेता। बच्चे लगातार फेल हो रहे हैं क्योंकि उनके पास में वोकैबुलरी कम है। अगर वो रिटन एग्जामिनेशन पेन पेंसिल वाला देंगे, कभी जिंदगी में पास नहीं होंगे। इसका मतलब है हम उन्हें ला रहे हैं, लेकिन हम उनको सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट उनका नहीं हो रहा है। बिल्कुल, मैं आप अपनी चीजों को लगभग खत्म करने के उस पर हूँ। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके लिए 3-4 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। इकोनॉमिक बैरियर्स का, हमें जेंडर इक्वालिटी का, जियोग्राफिक डिस्पैरिटीज का, रिटेंशन एंड ग्रेजुएशन रेट्स का ध्यान रखना पड़ेगा, एजुकेशनल क्वालिटी का ध्यान रखना पड़ेगा, कल्चरल कॉम्पिटेंसीज का ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, स्टूडेंट लोन की बात जहां पर आती है, ये एक बहुत कहना चाहिए कि शायद अंडररेटेड टाइप का एक फैक्टर है, लेकिन सच्चाई ये है, क्योंकि हम अपने जीवन में देख रहे हैं, अपने रोज सामने देखता हूं, स्कॉलरशिप्स नहीं मिल रही है, बच्चे पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। लेकिन उनको स्कॉलरशिप मिले कहां से, जब एक एक आदमी 3-3, 4-4 जगह से स्कॉलरशिप ले रहा है, तो किसी का तो हक मार रहा है। ये जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे स्टूडेंट्स में आना चाहिए। हमारी मेंटल वेलबींग की बात मैंने आपसे पहले कर ली है। तो हम क्या करें, हम अपने कॉलेजेस को अफोर्डेबल बनाएं, किसी भी तरीके से हो सकते हैं। हम अपने फाइनेंशियल एड्स को बढ़ा सकते हैं, ट्यूशन कॉस्ट को कम कर सकते हैं, इनकम बेस्ड रीपेमेंट प्लान्स चला सकते हैं। हम ऐसे भी प्लान चला सकते हैं जहां पर स्टूडेंट्स को अर्न एंड लर्न दोनों तरीके की चीजें मिल सकें। एजुकेशनल क्वालिटी को प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल्स में हमें बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम हायर एजुकेशन में बेस्ट इनपुट चाहते हैं, तो हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा कि हम अपनी कम्युनिटी के जो आसपास के कॉलेजेस हैं, हम सेकेंडरी या प्राइमरी कॉलेजेस केवल उनको अडॉप्ट करके भी वहां पर अगर हम अपने कार्यक्रम को चला लें, तो वहां से निकलने वाले प्रोडक्ट हमारे ही इंस्टीट्यूट्स में ज्यादातर आएंगे, क्योंकि वो सीख चुके होंगे कि आपके यहाँ के टीचर्स किस तरीके के हैं। एक्सेस टू हाई क्वालिटी यूनिवर्सिटीज इन रूरल एंड अंडरसर्व्ड एरियाज। सुना तो है कि कुछ विदेशी यूनिवर्सिटीज भी भारत में आने वाली हैं, चाहे स्टैनफोर्ड आ रही हो, ऑक्सफोर्ड आ रही हो, लेकिन वो आएंगी कहाँ? या दिल्ली में आएंगी, मुंबई बेंगलोर में आएंगी, क्या हमारी झुमरी तलैया में आ सकती हैं? अगर ऐसा होता तो शायद ये भी एक बड़ी बात होती। तो मेरा दूसरा थोड़ा सा इस मामले में व्यू है, मैं जस्ट ये कहना चाहता हूं, जरूरी नहीं कि हमारे यहाँ ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज आए, बल्कि हमारे अपने खुद के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज इस काबिल बने कि कैम्ब्रिज और इसके बराबर हम लोग हो सकें। क्योंकि हम जितना यहाँ के लोगों को समझते हैं, उतना बाहर वाला हमारे लोगों को आके
नहीं समझ सकता। इसके अलावा मैं जस्ट 3 चीजों के ऊपर बोलूंगा कि डाइवर्सिटी और इंक्लूजन ये दोनों अलग अलग होने के बावजूद एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड फैक्टर्स हैं। इसके ऊपर हमें सबसे ज्यादा काम करना होगा। इनोवेशंस हमारे बहुत ज्यादा भले ही ना हो, लेकिन ऐसे होने चाहिए जो हमारी डेली नीड्स को कैटर ऑन कर सकते हो। पार्टनरशिप्स हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, चाहे वो इंडस्ट्री लिंकेजेस हो, चाहे इंस्टीट्यूशनल लिंकेजेस हो, चाहे वो हमारे एक्सपर्ट एक्सचेंज, टीचर एक्सचेंज प्रोग्राम हो, चाहे स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स हो। हमें दूसरी यूनिवर्सिटीज में जाके देखना पड़ेगा, क्रॉस कल्चरल, क्रॉस ट्रेडिशनल, क्रॉस लैंग्वेज बैरियर्स के साथ में हमें ये चीजें देखनी पड़ेंगी कि हमारे स्टूडेंट्स को बेस्ट एक्सपीरियंस कहाँ से मिल सकता है। इसीलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इक्विटेबल एक्सेस टू क्वालिटी हायर एजुकेशन इज ए क्रिटिकल चैलेंज। यह हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है यदि हम साथ काम करें, मिलकर काम करें, एक उद्देश्य के लिए काम करें, तब जाके हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट हायर एजुकेशन में ला पाएंगे। और इस मिलकर काम करने के लिए यू ऑल आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन आवर हैंड्स विद ईच अदर। थैंक यू very much. Thank you so much, sir. Your insight has left an indelible mark on all of us. Actually, you made us think now that our students are really thinking deeper on this particular thing, and I'm sure they will join hands with you. Thank you so much, sir, for that wonderful session. Moving on further, it's my privilege to introduce our esteemed co-chair, Dr. Upasana Singh, Director, Human Touch Foundation, Greater Noida, Uttar Pradesh, India. Welcome, ma'am. Ensuring social, yes, ma'am. I'm just going to read your profile, and I'm extremely honored to do that. Ensuring social security, livelihood sustenance, dignity, and quality life to the economically weaker and vulnerable women and children by means of simple and most effective human touch is her single-minded pursuit in life. Dr. Upasana Singh, who crowned her academic success with a gold medal in her post-graduation with history in the year 1989 from Meerut University, is a distinguished social worker. Besides her large-scale association in various organizations, ma'am is also a founder president of the Human Touch Foundation and All India Women Conference Greater Noida branch. Ma'am further did her MPhil from Agra University and pursued research work with research fellowship from Indian Council of Historical Research on the topic Leadership, Satyagraha and Repression in Northwest Frontier Provinces. She was also awarded doctorate from Meerut University. She authored a book titled British Administration in India and has written a number of educational books and critical assessments of famous English literary works. Also, she has a number of research papers to her credit, published in reputed journals, besides having presented research papers at many prestigious seminars and symposiums across the country. Dr. Upasana Singh has established satellite center at nearby villages in Greater Noida with the objective to provide self-employment to women of economically weaker section of the society. It has been her continuous endeavor to provide medical treatment to the lesser fortunate people and their children by organizing regular free medical checkup camps in these villages. She has also been working for creating awareness among people towards different environmental and health issues, towards
hygiene, and maintain a cleaner environment. One of her major achievements was to set a low-cost biogas plant in our own kitchen garden, which encouraged society to a greater extent. Electronic and print media covered her efforts, and she won many awards for this. Many environment awareness programs have been introduced by ma'am. So the list is ongoing, and I'm really proud to welcome you, ma'am, for this session. We are eagerly anticipating to the insight and the discussion that you're going to do it with us. And your guidance is going to be very valuable to our participants. Please accept a token of gratitude from the organizers of the conference, this virtual memento. Thank you, Thank you, Jennifer. Thank you, ma'am. Thank you so much for accepting the memento. Actually, the program will proceed further with the paper presentations first, and then followed by different other steps involved. So may I proceed, Jugnu ma'am? Yes, ma'am. Kindly tell me the name of the participant so that ma'am. Okay, I will just give all the guidelines also first. Yes. We now commence with the paper presentation. Let me summarize once again the guidelines to the presenters and request the presenters to be concise and adhere to the time limit. 7 minutes for the presentation and 3 minutes for the question answer session. Without further ado, I would like to invite our chair, Dr. Kaushal Sharma, to officially commence this session, and co-chair, Dr. Upasana Singh. We look forward to your valuable contribution towards the session and dynamic synergy you will create with the chair, Dr. Sharma. Also kindly note that at the end of the session, we may have to present the best paper presentation report to the organizers. Requesting the chair and the co-chair to do the needful. Thank you. Kaushal sir, will you be comfortable in calling the participants, sir? So it is time for them to present their paper on the topic. I think sir is not there now. So, no issue, ma'am. You can take the name. You can call the presenters. So over to the first paper presenter, Dr. Shweta Bhargava, Assistant Professor, Sanjay Teachers Training College, Jaipur, Rajasthan, India. And her title is Equitable and Inclusive Higher Education for Sustainable Development. Shweta ma'am, are you here? Yes, she is. I request you to share the presentation on the screen. Ma'am, you are a co-host now. You can unmute yourself. Okay. Yes, ma'am. Yeah, I'm just sharing the screen, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, it is visible? Yes, ma'am, it is visible. If possible, kindly put it on the slideshow mode. There is an option to put it on a slideshow mode. Yes, ma'am. Now it's okay, ma'am. Yeah. Yes, it's fine. Right, fine. Okay. Thank you, one and all present here.
Good afternoon, everyone. Now I am going to present my paper. The topic of my paper is Equitable and Inclusive Higher Education for Sustainable Development. My overview of that paper is that higher education is a powerful tool of increasing access to highly skilled and highly paid jobs. And by providing this employment, it helps in achieving inclusive growth. Indian higher education system can address itself to the global challenges through maintaining the right balance between the need and the demand and channelizing teaching, research and extension activities. The 2030 Agenda for Sustainable Development, consisting of 17 Sustainable Development Goals and associated 169 targets. This agenda provides new global goal education. This goal is to provide inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all. This paper focus on the fourth agenda of SDG, which centers around the quality of education. The paper highlighted some challenges. What are the some challenges in higher education for sustainable development goals? The introduction of my paper is that every goal in the 2030 agenda requires education to empower people with the knowledge, skills, and values to live in dignity, build their lives, and contribute to their societies. Ambitions for education are essentially captured in Sustainable Development Goal SD4 of the 2030 Agenda, which aims to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all by 2030. The roadmap to achieve the education goal adopted in November 2015 provide guidance to government and partners on how to turn commitment into actions. It's also object provide equal access to affordable vocational training to eliminate gender and wealth disparities and achieve universal access to a quality higher education. This study focus on overview and performance of equitable and inclusive higher education for sustainable development education. These are the 17 sustainable development goal, which I think I have no need to describe. Then my objective of my paper is to overview sustainable development goal for education, to study inclusive and equitable quality education in India, to find present status of higher education system in India, to examine the growth of higher education in India, to find the problematic issues of higher education in India, to study the role and conceptual framework of the Global 2030 Agenda of the UN Sustainable Development Goal, to examine the concept of sustainability and discuss the role of higher education system. Methodology. The investigator attempt to study equitable access to quality higher education and inclusive growth and sustainable development in India. In this paper, the investigation was based on the different secondary data like abstract, journal, websites, government reports, research paper, and also different types of books. The challenges and issues of higher education in India that critical to making the Indian higher education system that financially innovations use of information and communication technology, research thrust on vocational education and training, very low capital spend on higher education in India, poor quality of graduates, lack skills of in most institution is very poor. It also fact that education has become a seller market and everybody wants to get more profit rather than the quality education. Increasing number of students going abroad for higher education, which is a drain on foreign exchange resources, high cost of education, traditional field of knowledge. Then recommendations which I have suggested that to take steps across the nation in general and in states having poor GER literacy rate, in special to expand general education and higher education, to have access to quality early childhood development,
to provide affordable and quality technical, vocational, and tertiary education, to increase the number of youth and adults who have relevant skills for employment, and to take initiative to eliminate gender disparities in education. The conclusion of my paper is that higher education could create a sense of responsibility in young adults to address sustainability by introducing sustainability in institutional operations, by making green campus, by offering educational programs and courses, by introducing creative programs, involvement of youth, change agents, and by extending the value. And if they are able to get quality education, they can break from the cycle of poverty, helps in reducing inequality. Education is between people and contributes to. Thank you, sir. And I will totally agree with the Kaushal, sir, that we have to come up and join our hands to make the higher education more effective. Thank you. Thank you so much. Thank you, Dr. Shweta. You can come out of the hearing, ma'am. Just a second, ma'am. I request the chair and the co-chair, any question to be asked, you can ask the participant, the paper presenter, or any other participants want to ask any question, you can post that in the chat box. I think Dr. the Shweta. opportunity will be given to the participants also. Yes, sir. That's what we are trying to do. Dear participants, if you have any questions to Dr. Shweta, you can ask now. May I go to the paper presenter too, sir? The second paper presenter? So here we have with us the paper presentation to Dr. Carlos Topo, Assistant Professor, Radha Govind University, Ramgarh, Jharkhand. And the title of the paper, Today's Need of Bisra Munda Agitation in Tribal People. So we are looking forward to the inputs from you, sir. Dr. Carlos, you can share the screen first. Can you share the paper, sir, or shall I do it? You're muted, actually. From our side, he is the co-host. I think there is Yes, some ma'am. technical glitch from the side of Dr. Carlos. Yes, sir. Yes, ma'am. Who is the next presenter? So that Dr. Sunita. Sunita, I think Sunita ma'am is here. Dr. Sunita is here. Sunita Bhargava or Sunita Babulkar? Because what's the full Babulkar, name? ma'am. Yeah. Okay, right. Sunita Subhash Babulkar. Right, because मैं फिर okay मैं इनके बाद मैं उनको co-host भी बना देती हूँ because इसके बाद उन्हीं का है, right? Yes, ma'am. Dr. Carlos, we are not able to hear you. Are you trying to speak to us? But we are not able to hear you, sir. I think you should remove the earphones because sometimes earphones. Can we, in the meantime, can we move towards the Sunita, ma'am? Yes, ma'am. Then we'll move forward to Dr. Sunita Yeah. for the paper presenter 3, the number 3. Yeah. Ma'am, you can share the screen. Meantime, Dr. Carlos will work on it. Yes, yes. Thank you, ma'am.
आया मैडम? We are not able to see, ma'am, still. सुबह मैंने भेजा था आपके पास। Okay, एक मिनट मैम, एक मिनट। आपका टाइटल क्या है मैम? जेंडर इक्वेलिटी इश्यूज एंड चैलेंजेस। यस मैम, मेरे पास है, एक मिनट मैम। I hope you can see the screen, ma'am. यस मैम, यस। गुड आफ्टरनून एवरीवन, CTPT members and Jennifer Robinson madam, Dr. Tanya madam and Sanjay Chaudhary इसको sir. ही कर दो, अब नहीं लेगा वो। My paper title Gender Equality Issues and Challenges. I am myself is Dr. Sunita Subhash Babulkar. I am Maharashtra, Nagpur, Jyotiba Phule College of Education. मैडम स्क्रीन आप ये करेंगे? हाँ। जेंडर इक्वालिटी रिक्वायर इक्वल एंजॉयमेंट by women and men of socially valued good opportunity, resources and rewards. Where gender equality exists, it is generally women who are included or disadvantaged on relation to decision making and access to economic and social requirement. Social हम लोग देखते हैं कि हमारे आगे जेंडर इक्वेलिटी ये बहुत बड़ी समस्या है, मुश्किल है, और इस समस्या को हल करने के लिए हमें जेंडर इक्वेलिटी में स्त्रियों और पुरुषों को एक जैसा अधिकार देना चाहिए। जेंडर इश्यूज इंक्लूड ऑल एस्पेक्ट्स आर कंसर्न रिलेटेड टू वुमेन एंड मेन्स लाइव्स and situation in social to the way they integrated their differences and access to the use of resource, their activities, and how the react to changes, invention and policies. जेंडर गैप जो है वो समझ लेना चाहिए, और जेंडर को इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स है, वो फैक्टर्स जो है वो उसमें हमारा कल्चर आता है, सांस्कृतिक मानदंड जिसे बोलते हैं हम, वो कल्चर, और हमारे इसमें डिफरेंट सिचुएशन होती है, भेदभावपूर्ण प्रथा होती है, और इस कारण असमान शक्ती संबंध रिलेशनशिप जो होती है, वो रिलेशनशिप भी उसमें अपने को एक जैसी दिखती नहीं, उसके इफेक्ट जो है लिंग भेदाचे परिणाम, जिसको इफेक्ट ऑफ इक्वालिटी के, उसमें लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज होती है, सोशल इनबैलेंस होता है, जेंडर इक्वालिटी होती है, सोशल रूल्स एंड मेथड्स रेगुलेशंस होते हैं, चाइल्ड मैरिज, टीनेज, प्रेगनेंसी, चाइल्ड डोमेस्टिक वर्क, पुअर एजुकेशन, हेल्थ, सेक्सुअल अब्यूज, एक्सप्लोरेशन एंड वायलेंस, ये सब उसके उस पे इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स होते हैं। जेंडर इन इक्वालिटी इशू इन इंडिया, जेंडर इन इक्वालिटी इन इश्यूज रेफर्स टू हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज बिटवीन मेन एंड वुमेन इन इंडिया। इंडिया में हमको दिखने को मिलता है कि लैंगिक असमानता एक जो दृष्टिकोण है, उसमें प्रांतीय असमानता आती है, प्रादेशिक असमानता जिसको बोलते हैं, स्टेट इनइक्वालिटी, लिंग असमानता में हर एक देश में और प्रदेश में लिंग असमानता बदल जाती है। लैंगिक समानता जो जिसे बोलते हैं हम जेंडर इक्वालिटी, उसमें आने वाले जो बैरियर्स होते हैं, वो बैरियर्स कल्चर मेथड जो होती है, वो उसमें आने वाले बैरियर्स होते हैं। उसके बाद एजुकेशन का अभाव, यानी शिक्षणाचा अभाव जिसको बोलते हैं हम, उसमें आने वाले जो लॉज होते हैं, लॉज एंड रूल एंड रेगुलेशंस जो होते हैं, वो भी उसमें आते हैं। उसमें इफेक्ट करने वाले जो होते हैं, हमारा अचीवमेंट आता है, और हमारे सामने के जो चैलेंजेस है, वो चैलेंजेस हमारे सामने आ जाते हैं। तो उन चैलेंजेस को हमको बदलना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है? वेरियस इंटरनेशनल जेंडर इक्वालिटी इश्यूज रैंक इंडिया डिफरेंटली इन ईच ऑफ this factor, as well as on the composite basis and their indices of controversial.
Gender issues importance. We need gender equality urgently. Gender equality present violence against women and girls. It's essential for economic prosperity, socialities, and values women and men as equal and safer of higher gender equality. The view first then the view that both men and women should receive equal treatment and not be discrimination against based on the gender. Second, then also known as sex equality, gender equalitarianism, sexual equality for equality of the genders. Sorry. Third, then the process by being fair to women and men. Fourth, then require equal enjoyment by women and men of socially value good opportunities, resource and rewards. And then five, it doesn't mean men and women being the same. Factor responsibility for gender inequality, literacy rate. Literacy is one of the factor responsible for gender inequality. Sorry, according to 2011 Cautious of India, the literacy level in India 74.4, in which the male literacy level is 82.14 and female literacy level is only 65.46. Sorry, ma'am. Child marriage. Children, especially the girls, are married at a very young age. This provides fatal for their overall development and have a negative impact on their health too. Social event like systems, sati system are also responsible for the low status of women. Discrimination against the girl child. The girl's child is not treated properly in the family. People still prefer the birth of the body rather than girl. The girl child is basically trained for household work only. Even today, female infanticide is common social evil. Lack of employment equality. The current global labor forces participation rate for women is close to 49%. For men, it's 75%. That difference of 26% point, with same region facing a gap of more than 50% point. Job segregation. One of causes for gender inequality with the employment is the division of job. In the most societies, there's an inherent belief the men are simply better equipment to handle certain jobs. Most of the time, those are the jobs, the pay of the best, and discrimination result in lower income for women. देखा जाए तो स्त्रियों और पुरुषों में बहुत सा अंतर किया जाता है और इसी कारण से kindly go to the conclusion part and kindly sum up your presentation. ठीक है, थैंक सॉरी मैडम, बीच बीच में मुझे खांसी आ रही थी इसलिए. Types of gender equality is inequality, family, nationality of inequality, professional of employment inequality, ownership equality, household inequality. Thank you very much. Thanks ma'am. बीच बीच में मुझे खांसी आ रही है तो. That's okay, ma'am. Thank you so much. So we are moving on to the next presenter. If there is any questions, the audience can ask to Dr. Sunita. I request the chair and the co-chair
to kindly post if there are any question. I'm not seeing any question in the chat box. I'm moving further to the next presenter. So the next presenter with us is Dr. Shalini. Before that, I just want to check, Dr. Carlos is ready with the presentation? Are you ready, sir? with your Yes, presentation? ma'am. Yes, ma'am. I'm ready. Okay, can you share the screen? Yes, ma'am. PPT I have given. If you can do the needful, ma'am. And there's PPT I have given to you. If you can do the needful. Okay, fine. 1 minute, sir. It is quality education in the era of, what is the title, sir? Today's need of Birsa Munda's Ulugulan in tribal people. Birsa Munda. Birsa Munda. Okay, I'll do one thing, sir. I will move to the presenter 4 and then I'll keep your slide ready. I was thinking you will do it. I'll just move to presenter 4 and then come back for presenter 2. Okay, sir. So, Yes. Dr. Yeah, thank you so much for Yes. understanding. Dr. Shalini is over here. Yes, ma'am. Yes, Dr. yes. Shalini Bharadwaj. Shalini Bharadwaj, wait a minute now. Yes, sir. Uh, Assistant Professor, Sarda University. Greater she is now a co-host. Noida. Can you make the co-host, ma'am? Yeah, I've done it. Shalini Bharadwaj? Yes, ma'am, I'm here. Okay. You can present the paper. Sure, ma'am. Followed by Dr. Carlos. Is it visible to everyone, ma'am? Yes, ma'am. You can place it in the reading mode so that it's easy to check. Place it in the reading mode for the slideshow. Is it okay? Yes, ma'am. It's perfectly fine. Thank you so much. Good afternoon, all the delegates present here. A very good afternoon to all of you. Dr. Shalini Bharadwaj, Assistant Professor, School of Education, Sharda University, is here to present my paper, that is Equitable Access to Quality Higher Education, that is Gender Equity in Higher Education. Nothing could be more crucial to democracy than the education of its citizens. I believe education is an important tool for social advancement, economic development, social cohesion, and peace. Today is not the time to remain illiterate. As an uneducated person, one is even more prone to exploitation, exclusion, and marginalization. Education for all is an important policy rigorously pursued by UNESCO and is followed by the nation state. So coming to the point, equity. Now, what is equity? It is the provision of personalized resource needed for all the individuals to reach the common goals. It means fair and impartial. In terms of gender, if I talk about the equality, it is a term that refers impartiality in the education, irrespective of gender, class, caste, disability, equal access, participation, and progression in the equation. That means equity leads to equality. The another keyword is the gender. Gender refers to those behaviors and attitudes which are culturally accepted as appropriate ways of being a woman and ways of being men, that is masculinity. So the keyword is the access in my paper. Access to higher education should be available to every citizen of the country, regardless of gender, class, caste, disability, and other factors. So to build sustainable society, the basic requirements are equal access and opportunity. In India, the recommendation of equality and equity in educational opportunities for men and women was suggested by the Kothari Commission in 1964 and 66. According to the National Education Policy 1986 and 2020,
And the program of action, it gives high priority to gender equality and equity, committed the entire educational systems to work for people belonging to different socioeconomic status, gender, race, and religion. Even the NEP 2020 aims to ensure that no child loses any opportunity to learn and excel because of the circumstances of birth or background. A special emphasis will be given to socially and economically disadvantaged groups, which include gender identities, socio-cultural identities, geographical identities, and disabilities. So NEP 2020 foundation pillars are access, which also included in the paper, equity and equality, which is also included in the paper, quality, affordability, and accountability, as Kaushal sir also suggested about these pillars, and I totally agree with him. Hence, for achieving SDG, that is the Sustainable Developmental Goals, IAU, that is Indian Association of University, believes that equitable access to quality higher education is an important that promotes social justice, equity, and developed personality. These are the benefits of equitable education in higher education: gender equitable education system, higher incomes and build better future. If in case there is a equality or equity in the education systems, then the students will get equitable opportunities and resources, and definitely they will get the good jobs, good pay scales. Then the third is the reduces inequality. If in case there is some, as I said, the NEP 2020 focuses on the socially and economically disadvantaged group, that is the gender identities, socio-cultural identities, and geographical identities. So it will also reduces inequality. It will also reduces vital issues like divisions, basis on the socioeconomic disparity, discrimination, that is the gender discriminations, gaps, that is gender gaps, conflicts between the sexes. It also prevents violence and sexual harassment against women and girls. It makes our communities' educational campus free, safer, and healthier. Impartiality in the distribution of benefits, power, resources, and responsibility between man and woman will also be reduced. These are the challenges in gender equality in higher education: gender discrimination, social and economic disparity. Social and economic disparities may include the different rural and the urban backgrounds. Geographical diversities also includes the students from the villages, small towns, and aspirational districts. Socio-cultural identities includes the scheduled castes, scheduled tribes, OBC, and the minorities. The patriarchal mindset, which is from the previous times, it also be a challenge in the gender equality, because the parents of the family thinks that if they have two children, then it would be better if they prefer to send their boy to the school rather than the girls, because it is a belief that a girl will help in to their mother in their definite domestic chores. Then the disadvantaged group, especially women from the rural poor homes. The disadvantages is basically the distance from the school, the load of the homework from for their family. Then considering marriage as a priority over higher education for girls, disabilities and impairment, gender identities. As the sir says, the transgenders are not yet given preferences in the higher education system. That is a challenge for them. So I think it is an important thing. Higher education teaching in local language, because it is important. Some of the students might be faring with the other languages like English or Hindi, and I think the local language should also be included in the higher education system. Then these are the objectives of the study: to know the status of gender equity in higher education, to find out higher education institution perspective on equitable access to resources, participation, and education outcomes in terms of gender, to access the differences in gender equity among students on the basis of resources and opportunities in higher education, to find out quality assurance in higher education. Now, gender equity policies of some of the institutes. This is Bennett University, Greater Noida. According to the gender equity policy of Bennett University, Greater Noida, higher education campuses have a special role in promoting gender equity between women and men. Gender responsive activities under a university-wide gender program include gender desensitization along with the addressal of any imbalance among student and staff in terms of student enrollment, employment, and retention. I belong to Sharda University. I teach there. So according to the Sharda University,
gender equity policy, Sharda University constituted a gender sensitization committee against the sexual harassment, aiming of the gender sensitization. Then Noida Institute of Engineering and Technology, according to the gender equity policy, the institute had always been sensitive towards the gender issue. In order to deal with the issues related to gender, the institute had a gender policy in place which conforms to the guideline of the Supreme Court on the matter. Then the Amity University, Noida and Greater Noida, it also made the it also promotes equity among the university staff and also the students. Then the methodology I promotes, this study is review based as well as a survey method is employed. For this, the secondary data is retrieved from different websites, research paper and governmental reports, ASH, that is All India Survey of Higher Education. These are the analysis and the interpretation. Gender-wise enrollment, if I go for the ASH report for the gender-wise enrollment, interpretation, I suggest is the gender-wise and distribution in different type of universities show that the number of males are more than the females. Similarly, with the gross enrollment ratio, according to NEP 2020, the gross enrollment ratio should be raised by 50% in the higher education institutions by 2035. And the graphs suggest that the for male population at all India level, it is 26.7, but for the SC male, it is 22.47, and for the ST male, it is 18.8. And for the female population, it is 27.9, which is quite rise. But the question arises whether the gender parity index ratio or the gross enrollment ratio is common for all the subjects. You can say in the gender parity index ratio, there is a participation of all categories 105 per 100 males, and for scheduled caste and scheduled tribe, it is 107 and 102 per males respectively. The females are higher in that, but the question, as I said, arises whether it is for all courses or it is for some courses. However, gender-wise distribution in AMPhil and is the figure interprets that the percentage of female is higher than the male in AMPhil. So basically for the liberal courses, the females are opting much. But when I talk about the STEM courses, the number of females is very less as compared to the men. So based on the conclusion, based on these studies, I concluded that and highlighted the insufficiency in imparting equitable higher education system in terms of gender equity. Many institutions are implementing policies, as I told about the Bennett University, Sharda University, National Institute of Education and Technology, MIT University, towards gender equity, but still there is a need to promote equal access to higher education to all students, regardless of the gender abilities and disabilities. Equal opportunities and unbiased education, patriarchal system following gender discrimination and gender equality must be abolished, and it is the hour of the need. Gender sensitization awareness must be imparted to create a beautiful gender unbiased society, and which is usually followed by the Sharda University time to time. These are the initiatives by government to improve gender equity in higher education, and we must follow it, the Beti Bachao, Beti Padhao scheme, which usually most of the institutes are following. The Sharda University is also a part of it. Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan, RUSA, which is basically to promote the gender equalization. UGC guidelines for Women's Studies Center, Saksham Scholarship Scheme for specially abled, so that the disabled children or the able children can also study together. To bring the inclusive education, National Scholarship Portal, Gender Sensitization and Awareness Program, Women Helpline Scheme, Nation Mission for Empowerment of Women, strictly enforce all no discrimination and anti-harassment rule. Recommendation by the NEP 2020 on equity and inclusions must be implemented that ensure sensitization of faculty, counselor, and students on gender identity issue and its inclusion in all aspects of HEI, including the change in the curricula. These are the suggestions for equitable access to quality higher education. Admission criteria must be the primary focus. I mean, the students or it should not be kept in mind the gender. It should be kept while the student, if the girl has get the highest marks or the boys, then the learner achievement and the entry qualification, all the students must be taken into considerations depending upon their abilities. Learner achievements and entry qualifications must be considered. Higher education that face challenges require policies that are sensitive to the gender equity. It is really important that every institute must have a gender equity policy.
and it must be implemented and followed. Recognize and reward higher education institutions that successfully serve individuals from underrepresented groups, irrespective of the gender biasness. I think gender biasness should be abolished from each institute. Then only we can pursue for the higher education advancement and then come to the academic outcomes also. Cross-border education exchange programs, international mobility should also be implemented. Admission policy must be developed and strengthened, and fair access to resource opportunities. And I think the participation in higher educations must be given to everyone. If we do so, Time, ma'am. then yes, ma'am, sure. Thank you so much. That's just I was about to complete it. In my Yes. point of view, I strongly believe if we can only prosper into diverse being, showcasing our unique imprint to the world after we have been provided equal education opportunities. It means equal resources, equal opportunities, and equal access. Thank you so much. Thank you, Dr. Shalini. I'm sure your research have made everyone to think, and your goal to reach unbiased society, and that is your research. That is what we understand. And I'm sure participants will be having some questions for you. If there Thank is you so anything, much, ma'am. you can put in the chat box. I think Nilofer ma'am is here. Would you like to ask any question to our participant, the paper presenter? No. It's Okay, very thank you, clear. ma'am. Thank you. Yes, ma'am. So moving on to the our Dr. Carlos, who has been waiting for a long time. So let me share the screen. Dr. Can you Kar, see the screen, sir? Yes, Yeah. I'm ready. 1 minute, sir. It's not moving. Just a minute. Yes, sir. You can just start the session. Good afternoon to you. I'm very grateful to Ctpd, such International Conference Era 2023. I'm very thankful to Mr. Saket Bihari, Professor Sumit Sharma, Dr. Kaushal Sharma, Dr. Jennifer Robinson, Dr. Upasya. The topic, I am Carlos Topko, Assistant Professor, Department of Education, Radha Govind University, Ramgarh, Jharkhand, a private university. I am teaching in B.Ed and MS. The topic of my research is today's need of Birsa Munda's Urgula agitation in tribal people. My research consists of introduction, overview, objectives, problem assessments, goals, methodology, finding, solution, recommendation, and the conclusion. So coming to my poetry, the overview, it discusses the life and legacy of Birsa Munda, a prominent leader in the tribal rights movement in India. It delves into the historical exploitation of tribal communities by outsiders and the impact of this interference on their way of life. Birsa Munda's early life, conversion to Christianity and teachings, including the 9 commandments, are highlighted. The study suggests a mysterious conspiracy surrounding his death, casting doubts on the official explanation. It also criticizes the government's refusal to hand over his body for burial according to tribal traditions. Ultimately, the study underscores the enduring legacy of Birsa Munda, the ongoing struggle for tribal rights. The 9 commandments, Birsa Munda, known as Earth's Father, the Siyama, attracted a large group of people who eagerly embraced his teachings, known as the 9 commandments. To still
To lie and to kill is very severe. Secondly, no one should beg. Thirdly, all of you are poor. Instead of worshipping, giving thanks and exorcism. Fourthly, do not worship any gods and goddesses. Fifthly, do not believe in gods, witches, and sixthly, truth. Mama, all these are the officers of the devil. With these intoxicants, intelligence is going to be destroyed from the roots. Therefore, do not consume any kinds of intoxicants. Seventhly, be incessantly hard working like ants. Eighthly, learn to live together like animals and birds. Ninth one, love everyone. The second one is honoring Samunda. Secondly, educational awareness. Thirdly, inspiration to have among the people of society. Fourthly, questioning injustice, question the circumstances surrounding the Samunda's death and the government's action, particularly witness of historical injustices faced by tribal communities. Fifthly, advocacy for tribal rights. Sixthly, persuasive the legacy, and certainly encouraging empathy. Another, we come to the problem statement. The problem statement is also around the historical and ongoing exploitation, injustice faced by tribal communities in India. It highlights the interest and the control of outsiders, particularly Darians, over tribal lands, leading to the loss of their way of life. It questions the circumstances of wisdom that which states there. The government refusal to follow the tribal tradition for these burials. The problem is under the force of the need to address the historical injustices by tribal communities, advocate for their rights, and pursue their cultural practices. It aims to draw attention to the ongoing struggle for tribal rights and social justice, emphasizing the importance of equality. The goals of the study can be summarized as follows. Firstly, honor the Samunda, raise awareness, and inspire changes. Fourthly, questioning on the authority to advocate for tribal. Sixthly, remember the legacy and promoting the I complete the methodology. My research method used to gather data and conduct research for these studies, primarily involved in historical research and literature analysis. Information was gathered from historical reports, biographies, and documented accounts related with the Munda and the tribal rights movement in India. Additionally, this very important qualitative analysis and interpretation of these research to provide insights into the historical context with Samunda's life and the social land experts of the time. These research approaches both a critical examination of existing material, the synthesis of information to present a comprehensive overview of the southern leaders and the challenges faced by the tribal people. Findings. It involves several significant findings. Historical is justice. So, this among us, in fact, the questionable circumstance, fourthly, cultural preservation, fifthly, and the and recommended. It's primarily historical narrative, and this among the legacy based on the content. Here, recommended that should be drawn by study. Firstly, for education. Secondly, to preserve the culture. Thirdly, the political land rights. Fourthly, legal reformation. Again, fifthly, to raise awareness among the tribes. Also, sixthly, advocate for
and this is the tendency movement by the anti-colonial with this there, vulnerable politics. These recommendations. You are there, historical injustices, no sense, promote social justice, aligning with the global themes of the lastly conclusion. In conclusion, this study illuminates the indomitable spirit becoming the rights in India, sets light on historical injustices. Despite tribal communities, becoming that legal ages full of resilience, unity, and social justice in the earth, inspiring both rights. A study underscores the importance of acknowledging historical equality and looking at land exploration, and education within tribal communities. It also emphasizes the need for transparency and empathy in assessing present and ultimately it serves as a reminder that the quest for tribal rights and social equality persists with some legacy continues to guide this noble journey. The outstanding figures for liberation movement are Ctpdcon-Era, Sulojan, Visamunda, and Jaipal Singh Munda. Thank you very much for listening to me. Thank you, Dr. Carlos. That was a pictorial presentation. Thank you so much for that. So any questions from the participants? With permission from the chair, moving on to the next presenter. The paper presenter number 5, she's pursuing the research, Rubia Ghazala. She's a research scholar, University of Kashmir, Srinagar, Kashmir, India. And the title of the paper, Quality Education in the Era of Digital Technology, a Review. Rubia, you are now a co-host. Yes, ma'am. Is my voice audible? Yes, ma'am. Rubia, ma'am, you're made co-host. You can share the screen now. Jennifer, ma'am, how many presentations are left? One more, ma'am. She's the 5th one and one more is there. Try to sum up in very fast because we have valedictory ceremony at 4:30 and we are getting late. So please. Yes, yes. Yeah. Please give both the participants 5 minutes each, right? Yes, ma'am. Rubia, ma'am, are you here? Yes, ma'am. Can you just share the screen for us? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'm doing that. Okay, thank you. So I would request Ms. Purva Chopra to be ready for the next presentation. After followed by Rubia, ma'am. Yes. Yes, ma'am. You can share the screen now. Ma'am, is my screen visible, ma'am? No, ma'am, you have not shared still. No. Can I present your paper otherwise? Because you have already shared with me. Okay, ma'am. Yeah. Just a minute. I think you're able to do yourself. So I'll just share because it's not visible. Okay, ma'am. Yeah. Okay, ma'am. It's fine, right? You're able to see the screen? Yes, Is this ma'am. Rubia? Yes. Okay.
I'm a research scholar from Baba Ghulam Shahbaz University. Good morning, good afternoon, everyone. It's a great privilege that I have been given opportunity to speak here. So, ma'am, can you please go on to the introduction portion? Introduction. The introduction, let us understand the meaning of digital technology. Digital technology has transformed the scenario of every field of human existence. It comprises a wide range of technologies as well as applications such as internet, mobile devices, digital communication systems, and computer hardware and software. Digital technology includes the activities like digital content creation, online communication, automation, and analysis of data. The fundamental components of digital technology include computers, smartphones, networks, data storage, and software applications that permit for the exchange and manipulation of digital transformation. In the United Nations Sustainable Development Agenda 2030, one of the fundamental components is quality education, that directed to ensure equitable and quality education for all. Digital technologies have emerged as an essential tool to achieve this goal and have shown a powerful impact on the education system. The use of digital technologies have rapidly changed our education system in the last couple of years. The recent outbreak of the COVID-19 has further accelerated the institutionalization of the applications of digital technology in education. Technological development in the education field have created convenience and easiness for the students. Digital technologies have revolutionized the education in various ways, like access to vast repository of knowledge, availability of digital platforms for self-paced learning, interactive learning through education software, virtual labs, personalized learning, global learning, communities, cost saving in digital textbooks, and open education resources, remote learning, and digital literacy skills. The objectives of my studies are basically, I have two objectives of the study. The first one is to explore the multifaceted role of digital technologies in the quality improvement of education. And the second one is to explore the importance of digital technology in today's classroom. Let us understand the literature in the perspective of literature view. We can understand the importance of digital technology here. Here are some points. Digital technology is vital in the current education system as it enriches learning, facilitates easy access to information, and prepares the learners for the digital age and challenges of future workforce. With the rise in the globalization of education, there has been dramatic rise in the use of digital technologies. The sudden outbreak of COVID-19 has forced every institution of the world to adopt the digital academic experience. Digital technologies have emerged as the savior of education in the crucial times of lockdown period. Today, modern education technologies and the underlying models and practices have become an integral part of teaching and learning process and have shown rapid and innovative growth within the higher education domain. The impact of ICT use on students' knowledge, skills, and attitudes have been investigated early in the literature. Barnskett et al. 2006 found a statistically significant positive correlation between ICT use and higher education achievement in primary and secondary education. Digital technology prepares students for a more unpredictable and changing future in which technology will play a critical role. The integration of digital technology in education is to transform teaching and learning into an enriching process for both teachers and students. Dear ma'am, sorry to interrupt. If you can go in the form of points, no, it will be like you can cover the entire slide. Okay? Because just reading won't help. Like you can go with summary points. Okay, I have some key points about the importance of digital technology, and I will only discuss the heading of this point. Yes, that is better, ma'am, so that you can cover the points. Okay, ma'am. Enriched, the first point is enriched learning experiences, access to information, enhanced personalized learning, rise in collaboration, improved teacher efficiency, flourishes remote learning,
especially during COVID-19, enables global connectivity, innovation in education, environmental impact, development of the real-world skills, more accessibility. And let us conclude, the use of digital technology has revolutionized education in several ways. There has been an abrupt enhancement in accessibility towards a wide range of online resources. Online digital resources have made education available to the global audiences, breaking down the geographical barriers. It has enriched the educational content, facilitated learning experiences, and equipped students with essential digital skills. However, it is essential to confess that technology alone is not a panacea. The effective integration of technology into education requires skilled educators and proper infrastructure. When used carefully and in coordination with finest teaching practices, digital technology has the capability to transform system of education, making it more engaging, inclusive, and effective for the learners of diverse backgrounds. Thank you very much. Thank you, Rubia ma'am. Thank you, ma'am. So, questions from the audience and the participants? If there are anything, kindly put in the chat box. We will take up for sure. With the permission from chair, moving on to the last presenter for today in track 4.1. Mrs. Purva Chopra, the research scholar, GD Goenka University, Gurgaon, Haryana, India. And the title of the paper, Education for All, Equitable and Inclusive Higher Education for Sustainable Development. Purva, you are a Mrs. co-host Purva, now. are you here? She is a Yes. co-host now. Yes, you are a co-host, so you can share the screen here. Yes, ma'am, it is visible and you can continue. Good afternoon, all the dignitaries present here. With due permission of chair and co-chair, I would like to begin without any. Ma'am, are you speaking? It's not audible. Yes, I'm speaking. Mrs. Purva? Am I audible, ma'am? Yes, ma'am. Yes. Thank Okay. you. Okay. So, good afternoon, all the dignitaries. With the due permission of chair and vice chair, co-chair, I would like to just begin with my presentation. The presentation is Education for All, Inclusive and Equitable Education for the Sustainable Developmental Goals. The linkage between the Sustainable Developmental Goal number 1, no poverty, and the role of inclusive education in achieving that. As we all know that SDG 1 says that it is to end poverty in all its forms and dimensions everywhere. What role inclusive education plays in it? Basically, inclusive education, we all know, is an approach that includes all the learners with different abilities and disabilities or different backgrounds without any kind of discrimination. So here the presentation focuses on non-discrimination, equal opportunities, accessibility, and active involvement of all the students in the learning process. Basically, inclusive education benefits students with disabilities not only, but also the broader society as well, providing social cohesion, reducing stigmatization, and preparing all the students for a more inclusive and diverse world. The study focuses on the access to education to all and the inclusion of all the learners in one go. SDG 1 and inclusive education are not different or separate from each other, they both go hand in hand. Methodology used in this paper is basically the secondary sources. Collection of data was through secondary sources, where different abstracts, research papers, journals, and websites were discussed and referred to. The objective of the study is to overview the SDGs and the role of inclusive education and equitable quality education in achieving SDG number 1, which is no poverty. The goals set in the year 2015 and with a target to achieve by 2030, what inclusive education has to offer and cater to in achieving the goal. That is goal number 1.
The relevance of the study is to break the cycle of poverty, basically to study how to break the cycle of poverty. As we all know that poverty is something which is the root cause of many problems in our society. How to provide marginalized and disadvantaged groups the opportunity to study together by reducing inequality, and what role does inclusive and equitable education plays in maintaining and promoting human capital formation in India. How to address the root cause of poverty. Basically, when we see diverse where when we see diverse delegate different type of students come together and with different abilities, they come together and learn together, they actually develop a better society, a better place to live in. Various problems in the way of higher education that ultimately leads to poverty, and how to eradicate poverty to lead to SDG number 1. Various problems are limited access and low enrollment rates, especially in the category of higher education, and a very much the tuition fee is so very high, which leads to the problem in attaining higher education. Lot of dropouts and stagnation happens at the level of higher education. The institutions which provide the education at higher education level, there are a few institutions which are not actually providing quality education, leaving the students in lurch, leaving the students without any employability skills. How to promote social inclusion with achieving a higher education through inclusive education. Gender disparities also play a role in keeping students at back foot for achieving higher education. Skill-based education is another problem in achieving higher education, because students, when we see that they do not get any employment even after achieving higher education, they don't get inclined towards achieving it. How to solve these issues? Increasing access and enrollment in the higher education will definitely serve the purpose, with affordable education by keeping the fee very, very low, providing the students the skill-based education so that they find vocational education for their benefit, monitoring accountability of all the stakeholders of the society, giving incentives to the research scholars at the level of higher education, also encouraging startups, encouraging vocational training institutes, encouraging people with different talents by stopping brain drain and encouraging them to stay in our own country. Also providing support to the marginalized and different groups which are not recognized in the society. Basically, the motto of removing poverty, which is SDG number 1, can be achieved by giving the opportunity to the marginalized groups, and it has to be a concentrated effort from the policymakers, educational institutes, civil society. The private sector also has to play a very big role in hand with government sector. So I must conclude with my presentation by saying that if India unlocks the full potential of its youth by implementing comprehensive solutions to the higher education, it can build a brighter future for all. Thank you so very much. Thank you for the issues and the solutions discussed, Mrs. Apurva. And I would like to say that the second author is Dr. Parvesh Lata, Associate Professor and Head in School of Education, GD Goenka University, Gurgaon, Haryana, India. So with that, we are concluding the session for the paper presentation. It's time now for the summary of the session by our co-chair. All our presenters had a wide range of information, and we have indeed gained a wealth of knowledge today. May I invite Dr. Upasana Singh to summarize the session and address the participants of the session. I hope ma'am is here.
Dr. Upasana ma'am, are you here, ma'am? For the summary of the session. Jugna ma'am? Yes, ma'am. Oh. May I proceed further? Yes, yes, please. Yeah. So we are now eagerly waiting for the insight and the reflection on the proceeding of this session. May I invite Dr. Sharma for the closing remarks. Thank you, sir. So I think you're muted. Wait a minute. Let me check one once. Yeah, please. Yes. Sir, you're muted. So now you can unmute yourself. Now, Yeah. now I can unmute. Thank you. Actually, thanks to all the participants, each and every presentation I heard, and there are amazing presentations. I don't know, maybe I am right or wrong, but Dr. Shweta Bhargav, Dr. Smita, Dr. Shalini, Dr. Carlos, Rubia Gazala, and Purva Chopra, these are the presenters. And everyone is very good in this, in their presentation. By the way, by going through all the discussions and all the presentations, I have concluded this some basic points. Everyone is discussing about the equity, all things are there. मेरी आवाज आ रही है उस साइड में? Yes, sir, you are audible. ओके, यहाँ पर कभी नोटिस आ रहा था कि शायद अनस्टेबल है. आप देखें कि जब हम लोग बात कर रहे हैं इक्वालिटी की, तो जो चीजें के सामने आई हैं, कुछ इश्यूज हमारे सामने हैं जो इन सारे प्रेजेंटेशन से निकल कर आए हैं. पहली बात है कि हमारा लो GER, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में है, मुझे लगता है ये लगभग स्टडीज कहती हैं 27:1 का हमारे पास में ये रेशियो है, जो कि यूएस से लगभग हमारा 88% कम है और चाइना से हमारा लगभग 51% के आसपास का ये कम है. ग्लोबल इनिशिएटिव्स को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन अभी हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कम है और मैं समझता हूं कि शायद NEP 2020 में भी गवर्नमेंट ने इस बात का, UGC ने इस बात का बहुत सारा प्रेशर जो है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर डाल रखा है कि अपना ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को थोड़ा सा बढ़ाइए, और केवल बढ़ाइए नहीं बल्कि उसको सस्टेन कीजिए. ये एक बात हो रही है. दूसरी चीज जो निकल के सामने आई है वो आई है पुअर क्वालिटी एंड रिलेवेंस. किस चीज की क्वालिटी? हमारी एजुकेशन की, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की, हमारे ग्लोबल रैंकिंग्स. आप देखें, इवन नेशनल रैंकिंग्स भी देखें तो बड़ा मुश्किल हो रहा है. अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए ग्लोबल रैंकिंग आए हुए, बहुत सारी चीजें हम लोग देखते रहते हैं, लेकिन आप देखें कि ग्लोबल रैंकिंग में हमारी कोई भी यूनिवर्सिटी पूरे इंडिया में टॉप 200 में नहीं आती. हाँ, इंस्टीट्यूट्स कुछ आते हैं जैसे आपके IITs वगैरह हैं, लेकिन वो इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज नहीं है. सोचें कि हम यूनिवर्सिटीज की हायर एजुकेशन की बात करते हैं और एक भी व्यक्ति वहां पर हमारा कहना चाहिए कि हमारा एक भी इंस्टीट्यूशन ये था, हम विश्व गुरु हैं, रहे हैं हमेशा से, फिर बनने वाले हैं, बीच में हट गए होंगे लेकिन फिर से बनने वाले हैं, तो फिर ठीक है, हमारा एक बनता है इतना तो. लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है, इसके पीछे के कारण हमें तलाशने होंगे. जैसा कि लगभग सभी पेपर्स में ये बात कही गई, इनसफिशिएंट फंडिंग्स, गवर्नेंस, ये शायद लैकिंग में है. काफी पेपर्स में ये बात आई थी, मैं देख रहा था डॉक्टर सुनीता ने और शालिनी भारद्वाज ने इस पर बड़ा फोकस भी किया था, हमारे जो इनसफिशिएंट फंडिंग्स एंड गवर्नेंस के विषय में. समस्याएं हैं,
मानते हैं। ऑफ कोर्स देयर आर मेनी challenges, many issues are there, but what are the solutions? हमेशा हम नेगेटिव साइड में सोच के नहीं रह सकते, हमें कुछ तो करना होगा। क्या करना होगा? हमें करना होगा या गवर्नमेंट को करना होगा? तो एक काम करते हैं, गवर्नमेंट को करने दीजिए, हम नहीं कर रहे। ये जो हमारी सोच है, शायद इसके कारण भी हम कहीं ना कहीं सफर कर रहे हैं। अगर हम केवल उसको इम्प्लीमेंट भी कर लें, कितने परसेंट कर लें? 1%, 2%, 10%? क्यों भाई, इंस्टीट्यूशन में पैसा हम पूरा ले रहे हैं, पूरा 100% हम लोग देने के लिए बैठे, 10% से काम नहीं चलने वाला। तो क्या क्या सॉल्यूशंस हैं जिन पे हम थोड़ा सा विचार कर सकते हैं? पहला है द एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूसिव प्रोग्राम, इक्विप, EQUIP, इक्विप के नाम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम लागू किया हुआ है टू इम्प्रूव इक्वालिटी, इक्विटी, एक्सेस एंड गवर्नेंस। इसमें अगर आप जो इसके प्रोविजंस को देखेंगे तो मुझे लगता है कि अगर उस प्रोविजंस को भी हमने 2-4 तरीके से लागू कर लिया अपने यहाँ बहुत बेसिक पे भी शुरुआत में, तो हम गवर्नेंस और इक्विटी और इन सब चीजों को हम अपलिफ्ट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा देख लेना चाहिए। मैं एक बार फिर से नाम बोल देता हूँ जिससे कि लोग जो भी हैं अगर नोट डाउन करना चाहें, वरना मुझे लगता है कि आपने लाइव स्ट्रीमिंग तो कर रखी है और शायद ये बाद के लिए भी मेरे ख्याल में देख पाएंगे लोग। यस सर। हाँ हाँ, गुड। तो फिर ये दोबारा रिपीट कर करके भी लोग देख लें। इक्विप के नाम से EQUIP। दूसरी है उन्नत भारत प्रोग्राम, UBP। उन्नत भारत प्रोग्राम में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को कहा गया है कि वो कम्युनिटीज के साथ में अपने डेवलपमेंटल चैलेंजेस को कैटर करें और उनके साथ में देखें। ये कम्युनिटीज के साथ जुड़ने की बात है। टोप्पो साहब जो कह रहे थे बिरसा मुंडा वाली बात, ये बहुत बड़ी जरूरत है। हालांकि वो ऐसा देख रहा था कि जैसे पढ़ने के बाद या उनके प्रेजेंटेशन के बाद में, यार कहाँ बिरसा मुंडा हमारे साथ में रिलेट हो रहे हैं। लेकिन आप देखें, एजुकेशन वो नहीं है जो हम 4 वॉल्स के अंदर पढ़ाते हैं। एजुकेशन वो है जो इन 4 वॉल्स के बाहर है। रियल एजुकेशन वही है। हम तो एक सिलेबस पढ़ा रहे हैं अपनी क्लासेस में, जो भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन हम 4 वॉल्स के बाहर कर रहे होते हैं। तो एजुकेशन हमारे पास बाहर से अंदर की तरफ आनी चाहिए, अंदर से भी बाहर की तरफ जानी चाहिए। तो ये दोनों के बीच में हमारी कंटिन्यूटी बनी रहे। तो बिरसा मुंडा का अगर हम देखें तो यहाँ पर कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की बात हमें सामने नजर आती है। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव होगा अगर हम UBP प्रोग्राम को भी अपने यहाँ लागू करवा सकें। और तीसरा, जैसा कि उन्होंने शालिनी जी भी बोल रही थी, सुनीता जी ने भी कहा कि रूसा के विषय में जो राष्ट्रीय उच्चतर से शिक्षा वाला अभियान है, उसमें कहा वो स्ट्रेटेजिक फंडिंग्स के विषय में आपको बताता है, वो बात करता है। तो हमें उन सब चीजों के जो इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस हैं उनको थोड़ा बहुत अगर हम देखें तो शायद हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे। अल्टीमेटली जो इस पूरे डिस्कशन में बात निकल के आई, हम सब फिक्रमंद हैं। वी आर वेरी ईगर टू कैटर दीज प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस, बट द थिंग इज हु विल ब्रेक द आइस? हम में से वो पहल कौन करेगा? शायद हम सबको करना होगा, शायद हम एक साथ करें तो ज्यादा जरूरी होगा, हम मिलकर करें तो ज्यादा जरूरी होगा। मिलकर कैसे करेंगे? ये जरूरी नहीं है कि हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है तो हम सो जाएं। ज्यादातर हम और आप सो रहे हैं। कोशिश करिए कि हमसे आगे निकल रहे हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। क्यों निकल रहे हैं ये हमें सोचना होगा। अगर वो निकल सकते हैं तो गवर्नमेंट हमें किस काम के लिए तनख्वाह दे रही है? एक ना एक दिन वो भी हमसे पूछेगी सवाल, जो कि पूछा जा रहा है और जल्दी फिर पूछा जाएगा कि आपने क्या किया। अगर आप वर्दी नहीं है किसी इंस्टीट्यूशन के लिए, गवर्नमेंट के लिए, तो बेहतर होगा यू विल बी किक्ड आउट। तो बेटर होगा कि अगर हमें अपनी पोजीशंस को बचाना है, अगर हमें अपने इंस्टीट्यूशंस को बचाना है, सबसे बड़ी बात अगर हमें अपने देश को, अपने लोगों को बचाना है, तो हमें ये मिलकर प्रयास करने होंगे। इसके लिए हम एक दूसरे से MOUs कर सकते हैं, गवर्नमेंट टू प्राइवेट, प्राइवेट टू प्राइवेट, प्राइवेट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, कुछ भी जिस लेवल पर भी हम कर सके। ऐसा नहीं है कि आप में से कोई भी काम नहीं कर रहा होगा। बहुत अच्छे अच्छे, मैं देख रहा था संजय TT कॉलेज में तो गया हूँ, वहां पे भी देखा है मैंने उनको, डॉक्टर सुनीता जी को, सुनीता भार्गव जी को।
वो बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं। हमारे साथ में उनका पुराना थोड़ा सा वो है। तो कहने का मतलब ये कि हम लोग जब देखते हैं कि आप भले ही छोटे लेवल पर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तो फिर ये बड़े जो लेवल पर जो लोग काम कर रहे हैं, उन्हें सोचना होगा कि वो अगर बड़े हैं तो उनको भी जुड़ना चाहिए, वरना वो बड़े नहीं बने रह सकते। ये समय बहुत कंपटीशन का है। हम और आप बहुत अच्छी चीजों पर विचार कर रहे हैं, आगे भी इस तरीके से विचार करें, लेकिन विचार करने के साथ इंप्लीमेंट जरूर करें। फिर मैं एक बार धन्यवाद दूंगा आपके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, पूरी टीम सीटीपीडी कॉन कर जो इसकी टीम है, उन सभी को, ऑर्गेनाइजर्स को, ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज को थैंक यू वेरी मच। ये मेरा अब आगे आपके ऊपर है। थैंक यू। Thank you, Dr. Sharma. I'm sure our participants have got an insightful closing remark from you. Your words have provided us with a profound perspective on the significance of this session. Thank you, sir, once again. Moving on to vote of thanks. Ladies and gentlemen, as we prepare to draw the curtains of this enlightening technical session at Ctpdcon-Era 2023, it is my pleasure to invite a distinguished individual among us to express our collective gratitude and appreciation for the valuable insights we have gained today. Now, I once again request Madam Dr. Jugnul Katar Bhatia, the Program Director, Research Circle, CTPD India, and the Organizing Secretary of the Ctpdcon-Era 2023. Actually, ma'am is a very dynamic and administrator and educationist. For the last 10 days, I'm seeing ma'am continuously working for the Con-Era. And today she's completely guiding me how to conduct this entire program. Thank you so much, ma'am, from the bottom of the heart for that. And her area of specialization is always in educational psychology, educational technology, teacher education, educational research, while also being a member, life member of various NGOs. The recipient of many awards and got a lot of laurels. She is selected as a member in the editorial board in various national and international journals. She has conducted several interactive sessions with teachers and students. There are several research Jennifer, papers. ma'am, thank you so much. Jennifer, ma'am, thank you so much. No, ma'am, if I don't say it is please, not correct. please. I would like to I'm very Yeah. privileged that you have given me an opportunity to propose a vote of thanks on the behalf Thank of you, the ma'am. Thank organizing you so committee much. of this But today. I would like to tell to the No, audience please, the last please. important point about you. No, ma'am, please. I would like to continue. Thank you so please. much. Okay. Thank you, ma'am. Over to you. I, on the behalf of organizing committee, convey my deep regards and hearty thanks to the chair of the session, Dr. Kaushal Sharma ji. I am also thankful to the co-chair of the session, Dr. Upasana Singh ji, for your presence. And I would like to thank the convener of this international conference, Dr. Sanjay Kumar ji, President CTPD India, for his constant help and guidance that radiated a source of energy within us. And an event of this dimension can't happen overnight, and the wheels start rolling months in advance. So we are very fortunate enough to be backed by a team of very motivated and dedicated executive members of CTPD India and the volunteers. And I can't thank everyone enough for the involvement they have shown and the willingness they have expressed to take on the completion of tasks beyond their comfort zone. And I'm very much thankful to our organizing partner, knowledge partners, and the publication partners. It would have been impossible to organize it without their support. And a very sincere thanks to the moderator of the session, Jennifer Robinson, who handled the event throughout. A wide round of applause and thanks to all the paper presenters and participants from different educational and professional organizations who made the event a memorable one. And now I request you to join us for the valedictory ceremony at 4:30 p.m. Indian Standard Time. Finally, once again, I would like to thank all the honorable delegates who blessed us with their presence. And I'm also very much thankful to all the executive members. Once again, our valued paper presenters and eminent official of our organizing and knowledge partners for being a significant part of this conference. Thank you so much. And we are looking forward
for all of you will join in the valedictory ceremony. And the link of the valedictory ceremony will be shared in your respective groups, and hope to see you at there 4:30 p.m. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for the vote of thanks. So once again, I request our participants to keep the camera open to have a group photo, followed by we have the validity session going to happen. I want you all to join over there. And there is a feedback link to be shared with the participants, ma'am. I have In the shared the chat. link. I have shared the Yes. link already, and the Yes. participant can fill the feedback form. Kindly So fill the I feedback. request the sorry, No, it's okay, ma'am. It's okay. I'm just trying to take a photograph of, Yes. yes. So knowledge is a journey and not a destination. We have come to the end of this session. Thank you so much, dear paper presenters, for a wonderful session. Everyone is best, no doubt, but we will be waiting for the result from our chair and co-chair. So please join us for the valedictory function. Thank you so much. Thank you so much. Participants are requested to fill the feedback form kindly. Before leaving, fill the feedback form and join us at the valedictory session at 4:30 p.m.